देखिए इस तरीके से 10 मिनट अच्छा पका लेना मटन। ऐड करेंगे मसाला। मसाला पका उसके बाद दही और अपना मसाला ऐड करेंगे। जबरदस्त तेल छोड़ने तक मसाला पकाएंगे। इस तरीके से मसाला अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज देखिए मटन कोरमा बना रही हूँ। अच्छा मटन 3 पानी में क्लीन कर ली। देखिए 1 किलो मटन है ये, ले ली। इसमें फ्रेश अदरक लहसुन नमक के ऐड करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये सब कलियाँ लहसुन 1 इंच अदरक फ्रेश जब का जब पीस के ऐड कर। अदरक लहसुन 1 चम्मच फ्रेश मसाले ऐड करेंगे मटन में। देखिए आधी चम्मच हल्दी, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लेना 1 चम्मच ले लीजिए। पहले मटन को अच्छा गला लेंगे। गलाने के बाद दिखाती हूँ। 1 बट्टी खोपरा प्याज ले ली। खसखस मंगाने भेजी, दिखाती हूँ आप लोग को। फ्रेंड्स सब भून लेके लाल तिल खसखस खोपरा है ये प्याज अच्छा मसाला पेस्ट। तिल खसखस नहीं, तिल खसखस खोपरा ये प्याज है। इसमें काजू बादाम भी ऐड कर सकते हैं। मैं देखिए गोश्त के साथ में एकदम नरम गल गया। देखिए तेल ऐड करेंगे मेरे हिसाब से 1 कप। 1 चम्मच लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छा पकने देंगे। इस तरीके से 10 मिनट अच्छा पका लेना मटन। ऐड करेंगे मसाला। इस तरीके से मसाला पकाएं। उसके बाद
बस